Jack Dorsey lost $576 million net worth after the Hindenburg research report was out in the market. On 23rd March 2023, Hindenburg Research posted something on their Twitter around the block incorporation. And because of this, the share price tanked heavily. Now, those who do not know what is Hindenburg, Hindenburg is the short seller known for its in-depth analysis and research on the company deems to be overhyped or fraudulent. जिस भी कंपनी में उन्हें लगता है कि कुछ fraudulent activity चल रही है या फिर वो overhyped है for no reason, उन कंपनी का पर्दाफाश करती है Hindenburg Research. And this time the target was Block Incorporation. And you can see the charts. On the same day as the report was out, the share tanked by 22%. Now, prior to Block, something similar happened with Adani Group, and we saw what happened. The prices of Adani Group and its subsidiaries tanked by 50% or 70%, and this was because of the allegations put up by Hindenburg Research. Those who do not know what happened with Adani Groups, just go check out this video. I'm pinning it in the I button. Now, moving ahead, yet this time again, Hindenburg Research has recently posted or mentioned they have short sold the shares of Block Incorporation, and this is something that they mentioned on their website. So I'm just pinning the link in the description box, but you can go check out our Twitter जहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी information and all relevant links post किए हैं. Now they clearly mentioned that they have taken a short position on this particular stock because they are very bearish on it. It is overhyped and there are many fraudulent activities happening with it. But all those readers who are watching this video must do their due diligence. Now let us just deep dive into the company Block Incorporation and understand how it functions, what is the business model, and everything about it. So Block Incorporation came into existence in 2009 and it was founded by two people. One was Jack Dorsey, another one is Jim McIlvey. Jack Dorsey is also the former CEO of Twitter and also the chairperson and co-founder of Block Incorporation. On the other hand, Jim McIlvey is a billionaire businessman and is also the co-founder of Block. And they launched the first platform in 2010. Now, from its founding to December 10, 2021, the company was known as Square Incorporation or Square. And it is not a company which is from India. It's not listed on NSE or BSE, but it is listed on New York Stock Exchange, which is NYSE, since November 2015 with the ticker name SQ. Square. Now let's talk about the business and the revenue model of the Block Incorporation. So there are 5 key revenue streams, out of which the first 2 are very important to them. The first one is Square is a company which allows small and medium-sized businesses to accept credit card payments using their smartphone and tablets as a register. So it's acting as a merchant in this case. For example, if I was running a company and I wanted to accept the credit card payments from someone, I can use the technology that is being developed by the Square, and they will be charging some merchant fees for this. Second key revenue model is the Cash App. So Cash App allows people to send money or receive money. At the same time, they also give this facility where then people can trade and buy and sell bitcoins and stock. So in this case, it is acting as a payment gateway. For example, we use Google Pay, right? We use Google Pay to send amount from one place to another. Similarly, using Cash application, you can transfer money from one person to another. The third one is Afterpay, which is a company acquired by Block Incorporation, which allows people to buy things now and pay for it over a period of time, which is buy now, pay later, BNPL. The fourth one is Weebly, which allows people to create website. And the last one is Tidal, which helps people to listen to music, podcast, or watch some videos for a fees, similar to what we do with Netflix. Now, I went through their website. I really loved their website for a reason. You can just go check it out. The link is in the description box again, or you can go to Twitter and go through the thread. Now, let us understand the inspiration behind starting Square or Block Incorporation. So in 2009, Jim McIlvey, which is a co-founder of Block Incorporation, he was facing some issue. He was not able to accept the credit card payments of $2,000 for selling his glass faucets and fittings, because he had this roadblock where he did not have a medium to accept credit card payments. He discussed the same thing with his friend Jack Dorsey, and both of these guys came up with the idea of finding a technology which can help people, businesses to accept credit card payments. And this was the inception of Square Incorporation. And the name Square is derived from the fact that they have square-shaped card readers. So you can see the picture, right? There's this square kind of a thing and it's trying to read the credit card. So this was the technology. Now Square is a $44 billion market cap company. Now obviously the market cap can change as there is fluctuation in the price of the stock, but it has done its angel investor round, series A, B, C, D, E round from some of the biggest names in the market like Kevin Ross, Biston, MC Hammer, Starbucks, Goldman Sachs, and a lot of people. So if you want to know exactly who were the people who were involved in angel investment round or series A, B, C, D, E, you can have a look at this picture. Now the co-founders of the company claim that they have developed a financial technology which is very easy and convenient to use, and they use words like frictionless and magical to explain or mention about their technology. Now according to them,
They want to help people who do not have access to traditional banking system. Either they are unbanked or they are underbanked. That means they do not have a bank account or they have very limited access to the financial services that are being provided by the banks. And for that reason, they have come up with this idea where they can help people manage their money more effectively through their technology. Now, I hope you understood about the company as a whole and about its co-founders. Now, let us understand what are the allegations that are being put up by Hindenburg Research. And this is something that they have mentioned on their website. So the very first one on the list is Hindenburg Research conducted an investigation where they interviewed their former employees, partners, industry experts, reviews of regulatory and litigation records, FOIA and public records, and they concluded that Block has been taking advantage of the demographics it claims to be helping. That means जिन लोगों की मदद करने की ये बात कर रहे हैं, जो अंडर बैंक्ड हैं या फिर जिनके पास बैंकिंग अकाउंट्स नहीं है, उन्हीं लोगों का एक्चुअल में ये फायदा उठा रहे हैं. The second one is misleading the investors. So the Block has overstated the active or genuine user counts and understated its customer acquisition cost. The investigation shows that 40 to 75% of the users which are being reviewed are either fake, involved in frauds, or a single person has multiple accounts. Let us understand this. For example, if I was an investor, मैं क्या क्या चीजें देखता इस बिजनेस के बारे में कि इनके पास कितने जेन्युइन यूजर्स हैं, कितने लोग हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा. सेकंड थिंग, उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत ही अंडरस्टेट करके बताई. फॉर एग्जांपल, किसी भी इंसान को मार्केटिंग करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए अगर कुछ एक्स अमाउंट लग रही है तो इन्होंने बहुत कम अमाउंट इन्वेस्टर्स को दिखाई है कि हमारे को सिर्फ इतना सा अमाउंट लग रहा है कस्टमर्स को लाने के लिए. वी हैव अ ग्रेट टेक्नोलॉजी. अनदर थिंग, जो भी लोग हैं इनके प्लेटफॉर्म पे जिनका इन्वेस्टिगेशन किया गया उनमें से 40 to 75% या तो फेक अकाउंट से आए हैं, मतलब कंप्लायंस स्ट्रांग नहीं है. सेकेंड थिंग, वो किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल सेक्स ट्रैफिकिंग या मर्डर्स. एंड द लास्ट वन इज एक सिंगल बंदे ने 10, 12, 15 अकाउंट्स खोले हुए हैं और वो 15 अकाउंट्स को वो जेन्युइन यूजर अकाउंट में काउंट कर रहे हैं, विच इज नॉट राइट, क्योंकि बंदा तो एक ही है, इंसान तो एक ही है. एंड मल्टीपल अकाउंट्स खोलने अलाउड भी नहीं होने चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस. थर्ड वन इज फेलिंग टू बैन फ्रॉडस्टर फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म even when they were blacklisted. So a former customer service rep shared the screenshots showing that जो blacklisted accounts हैं वो लोग किसी और अकाउंट से इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई मर्डर है उसके लिए उनको पैसे लेने हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके ले रहे हैं. मतलब कोई भी इलीगल मीन्स या इलीगल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है. फोर्थ वन, Dorsey has been publicly very proud about the fact that cash application that they have has been mentioned in hundreds of hip hop songs. Now, something very interesting. After going through the video, Hindenburg went through the raps, the hip hop songs, and what they found कि यहाँ पे कैश ऐप के यूजर इंटरफेस की तारीफ नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पे इनके द्वारा किए गए स्कैम्स और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का पर्दाफाश किया जा रहा है. ट्रैफिक, ड्रग्स एंड इवन पेज फॉर मर्डर्स, ये सारी बातें इन रैप्स में की गई है. नाउ इफ यू वांट टू लिसन टू दोस रैप्स और कंपाइलेशन ऑफ द म्यूजिक वीडियोस, you can go to this Twitter thread. You will find the link right there. Hindenburg Research has clearly revealed how Cash App has been overrun with the scam accounts and fake users, and it has been used to facilitate sex trafficking of minors, and even murders for hire. And you can check out this picture. Police arrest 5 members of drug trafficking organization Cash App. Now we already know कि इस प्लेटफॉर्म पे कैश एप्लीकेशन पे बहुत सारे फेक यूजर्स हैं, बट लेट मी टेल यू कि किस किस नाम से फेक यूजर्स अकाउंट बने हुए हैं. देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स इन द नेम ऑफ जैक डॉर्सी हिमसेल्फ, Elon Musk and Donald Trump. Now to test this whole thing out, Hindenburg turned their account into a fake account of Donald Trump and Elon Musk, and they started to send and receive payment, and they were able to do so successfully on the platform. They ordered a cash card under the fake name of Donald Trump account, checking to see if the cash applications compliant team will be able to catch it or not. But no, they could not catch it, and the card promptly arrived in the mail. So directly इनको mail पे card मिल चुका है, even when the account was fake. Now, in Jan 2022, Block closed a deal of $29 billion where they acquired BNPL, Buy Now Pay Later service, Afterpay. And they were celebrating this as a major financial innovation where people can come to their platform, they can buy a pair of shoes, they can buy t-shirts, and they do not have to pay immediately, and there will be no interest charged to them until and unless they are not able to make their payments on a certain time period. And after that, when the payment is late, they will have to pay some massive fees. अब सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि it is similar to EMI. EMI में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, बट इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, और अगर हम लेट पेमेंट करेंगे तो हमें एक मैसिव फीस देनी होगी, which is fine. तो इसमें दिक्कत क्या है? But let me tell you, Afterpay was designed in a way that avoided responsible lending rules in its native Australia. तो जहाँ से ये कंपनी थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स थे उसको ओवरपास किया गया.
extending a form of credit to users without income verification or credit checks, because it is something that we need to do. अगर आप किसी को लोन दे रहे हो या फिर आप किसी को EMI पे चीजें देना चाहते हो या फिर आप लोन लेना चाहते हो, तो उन सब के लिए आपको पहले यूजर का बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका सैलरी है, क्या वो पे कर पाएगा या नहीं। पर ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं हो रही थी। Now the service doesn't charge interest, but the late fees can reach APR equivalent to as high as 289%, which is huge. Number 7. During COVID-19, the block's main source of profit, the merchant service, was in danger. Thus, the Cash App allowed users to receive government COVID relief payments easily without a need of bank account. However, some states suspected fraudulent payments and wanted to recover millions. अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको भी पता है कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन है सबके पास बैंक अकाउंट नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो कैश ऐप कैन बी अ वे जहां से हम जो अपना रिलीफ फंड है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की जिस वजह से पेमेंट सही लोगों को नहीं मिली, काफ़ी सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की गई पैसे से, और काफ़ी सारे स्टेट्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने इन पे एलिगेशंस लगाए उस वक्त। नंबर 8, पोटेंशियली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय SEC, विच इज द रेगुलेटरी बॉडी for bypassing the capped interchange fees and charging elevated merchant fees. So एक सिंपल सी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आप रेजर पे यूज़ कर रहे हो पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए, तो रेजर पे 2% 4% आपसे चार्ज करेगा टोटल पेमेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसमें से 3% या 5% वो अपने पास रखेंगे, दैट विल बी द फीस। लेकिन इस पर एक कैप होता है, यू कैनॉट आस्क कस्टमर्स कि इससे मतलब 10-12% आप पे करो, इतना बड़ा अमाउंट आप नहीं मांग सकते। सो इट्स डिफरेंट विद डिफरेंट मर्चेंट्स एंड देयर आर डिफरेंट रूल सेट। पर इनके लिए जो रूल सेट थे, जो मर्चेंट्स के उस कंट्री में रूल सेट थे, इनको सरपास करके वो पेमेंट चार्ज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ 5% वॉज द थ्रेशोल्ड, तो ये चार्ज कर रहे थे 7, 8, 10, विच वॉज नॉट राइट। नंबर 9, नाउ अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग की जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है ना, वो कोई टॉप टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हारी टेक्नोलॉजी में नहीं है जिसको तुम इतना ओवर हाइप कर रहे हो। देयर समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द सिमिलर बिजनेस आर ऑलरेडी डूइंग। तो तुम्हारे पास ऐसा अलग क्या है? And on the top of it, Block is facing threats from its key competitor, which is Zelle, PayPal, and the fast-growing payment solutions from Apple and Google. Now, according to Hindenburg, अगर हम अपनी रिसर्च ना भी करते तो भी हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से इसमें डाउनसाइड देख सकते थे अराउंड 65 to 70%। हमें लगता है ये कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है, एंड दे मेंशन सम रीजंस फॉर इट। सो द फर्स्ट वन इज दे रिपोर्टेड 1% ईयर-on-year revenue decline in 2022. Second, GAAP, which is generally accepted accounting principle, with a loss of 540 million in 2022 again. And it is valued at EBITDA multiple of 60x, which is huge. And the next one is Forward 2023 adjusted earning multiple of 41x, and the price of tangible book ratio of 13.1x. So according to them, इनके पास बहुत ही ऐसा कुछ खास नहीं है। On the top of it, इनके जो फंडामेंटल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये लॉसेस इनकर कर रहे हैं। इनकी जो बैलेंस शीट है या फिर जो इनकी वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड फॉर दैट दे हैव ऑल्सो शेयर्ड एन इमेज जहाँ पे उनके कैश ऐप के इन्फो दिखाए गए हैं बाय ईयर्स, एंड इट इज डिक्लाइनिंग, लाइक हर साल वो परसेंटेज ग्रोथ कम होता ही जा रहा है विद अ वेरी हाई रेट। एंड इट ऑल्सो शोज द कैश ऐप मंथली ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज जो भी हर साल डिक्लाइन हो रही है। सो दिस इज द रीजन कि उनको लगता है कि ये कंपनी बहुत ओवर हाइप्ड है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली ओवर ईयर्स डिक्लाइन हो रही है। नाउ माय ओपिनियन और माय टेक ऑन दिस, फर्स्ट थिंग, आई डेफिनेटली फील नाउ दैट द कंपनी इज ओवरवैल्यूड, एंड इफ ऑल द एलिगेशंस दैट आर बीइंग पुट अप बाय हिंडनबर्ग अगर वो सच होते हैं तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ ब्लड इन द मार्केट एंड दिस स्टॉक विल टैंक डाउन हेवीली, राइट। 22% तो ऑलरेडी डाउन हो ही गया था उसी दिन। सेकंड थिंग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। द ब्लॉक रिपोर्टेड अ पेंडेमिक सर्च इन यूजर काउंट एंड रेवेन्यू which rose the share price by 639% in 18 months. 1.5 साल के अंदर इनका जो शेयर प्राइस है वो 6.5x हो गया था। एंड द रीजन फॉर दैट इज कि पेंडेमिक में, बिकॉज वो रिलीफ फंड के बारे में बात कर रहे थे कि हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके पास बहुत सारे यूजर्स आए, इन टर्न उनका रेवेन्यू बढ़ा, बट दिस समथिंग दैट दे मेंशन्ड, उसमें बहुत सारे अकाउंट्स फेक थे। और इस हाइप की वजह से जहां पे लोगों को दिख रहा है कि इनका बहुत अच्छा बैलेंस शीट है, बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट दैट वाज नॉट टोटली राइट। और उस वजह से अगर आपको 6.5 टाइम्स आपका शेयर प्राइस अप्रिशिएट कर रहा है इन 1.5 years, टोटली अनसस्टेनेबल, राइट। एंड द लास्ट वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन अगेन, एज ब्लॉक प्राइस सोर्ड, जो पेंडेमिक में इतना प्राइस बढ़ गया था, जैक डॉर्सी एंड जेम्स मैकिलवे collectively sold $1 billion ऑफ स्टॉक ऑफ द कंपनी। उन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की आफ्टर द सर्च। डेफिनेटली उनको कंपनी में प्रॉफिट कमाना था, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे आफ्टर ऑल द हाइप दैट दे जनरेटेड। अदर एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग द CFO अमृता आहूजा एंड द लीड मैनेजर ऑफ कैश ऐप ब्रायन ऑल्सो डम्प्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन स्टॉक। सो यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ तो
सही नहीं था कंपनी में, अदरवाइज व्हाई विल सो मेनी पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। समथिंग सिमिलर वी सॉ विद द सिलिकॉन वैली बैंक रिसेंटली, जहां पे जो उनके को फाउंडर्स थे, जो उनके की प्लेयर्स थे, राइट, उन्होंने अपने शेयर्स बिफोर द शेयर प्राइस टैंक पहले ही बेच दिए थे। सो यहाँ पे कुछ तो गलत है। नाउ द लास्ट थिंग, अब जब भी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट आउट होती है तो वो कंपनी जिसके अगेंस्ट वो रिपोर्ट होती है वो डेफिनेटली ट्राई करती है कि हम हिंडनबर्ग के अगेंस्ट एक्शन ले, उनको स्यू करें। डेफिनेटली जो अडानी के केस में भी हुआ, अडानी ने भी सेम चीज करने की कोशिश की। नाउ ब्लॉक रिस्पॉन्डेड टू दिस एलिगेशन इन अ प्रेस सेइंग, वी इंटेंड टू वर्क विद द SEC and explore legal actions against Hindenburg Research for the factually inaccurate and misleading report they shared about the cash app business today. So वो कहते हैं कि ये जो एलिगेशंस हैं गलत हैं, जो नंबर्स और फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो एकदम गलत हैं, एंड वी वांट टू हैव सम सीरियस लीगल एक्शंस अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिसर्च। पर देखते हैं क्या होता है। दिस इज समथिंग दैट विल नीड टू कीप अ चेक ऑन। But guys, if you loved the video, if you loved and you understood some things about what's happening with Hindenburg and the Block Incorporation, make sure that you subscribe to this channel, like this video, because there was a lot of hard work put in for the research and bringing this content out. So make sure you like this video, follow us, and make sure you follow us on Twitter, because वहाँ पे information YouTube से थोड़ा पहले आ जाता है, because it takes time in production and all. So thank you so much guys for joining in. I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.